Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Lizanne, the moderator for this conference call. Welcome to the Investor and Analyst Conference Call of Ice Make Refrigeration Limited, arranged by Ariana Matasco Emerging Company Reputation and PR Service Provider, to discuss the financial results of Q3 FY23 and first 9 months ended 31st December 2022. At this moment, all participant lines are in the listen-only mode. Later, we will conduct a question and answer session. At that time, if you have a question, you may please press star and 1 on your touch-tone keypad. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Aryan Rana from Ariana Matasco. Thank you, and over to you, sir. Thank you, Lizanne. Good evening to all of you, and thanks for joining the 15th Analyst Conference Call of Ice Make Refrigeration Limited, a leading supplier of innovative cooling solutions and manufacturer of 50+ refrigeration equipments in India, to present and discuss the financial results for the third quarter and 9 months ended 31st December 2022. Ice Make, along with a strong vision, mission values, and corporate philosophy, is one of the finest company with a strong corporate governance. Those who are new and just started tracking the company will be surprised to know that company has been doing analyst calls from the days when it was listed in an SMA platform. Company always communicates and addresses queries in a crystal clear manner to its investors and other stakeholders. So the company with a vision to be top player in its business space is at a sweet spot of a strong growth, which is clearly visible in their post-COVID financial performance. The company over the years has developed strong basket of products manufactured in-house under 5 business verticals like cold rooms, commercial refrigeration, industrial refrigeration, transport refrigeration, and ammonia refrigeration, and has been consistently improving, innovating, and expanding, adding new products, new solutions, and new clients. As a unique player in the industry, Ice Make is in the forefront in catering to the cooling requirements of various industries, where it serves large number of varied clients and customers by producing innovative cooling refrigeration solutions to industries like dairy, ice cream, food processing, horticulture, agriculture, pharmaceutical, cold chain, logistics, hospitals, hospitality, and retail. You name, they are there everywhere. We have mailed the results to you. I hope you've received the same, and we have also uploaded this on our website and on the stock exchange. Before we proceed to the call, let me remind you that the discussion may contain forward-looking statements that may involve known or unknown risks, uncertainties, and other factors. It must be viewed in conjunction with our business risks and that could cause future results, performance, or achievements from what is expressed or implied by such forward-looking statements. To discuss the results and address the queries of the investors, we have with us the management represented by Mr. Chandrakant P. Patel, Chairman and Managing Director, Mr. Nikhil Bhatt, Vice President of Strategy, Mr. Ankit Patel, CFO, and the key management from the Ice Make Refrigeration Limited. We will start the call with CMD's remarks on business updates and followed by financial highlights and business updates and industry updates from Mr. Nikhil, and then we'll open the floor over to the Q&A session. With that said, I will now hand over the call to Mr. Patel. Over to you, sir. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. I, Chandrakant Patel, CMD of Ice Make Refrigeration Limited, warmly welcome you all to the earnings conference call to discuss the financial results of Q3 FY23 and the growth strategy going forward. As you may have noted, Ice Make has been able to report
robust earning result for the third quarter and 9 months ended December 31st, 2022, and pace of growth recorded in previous quarter continued in Q3 FY23. Strong demand and recovery in the end market led to robust growth of 36% in our revenue and 248% in profitability in the reporting quarter under discussion. The company continues to capitalize on robust demand to deliver higher growth and better profitability. Strong control over cost resulted in higher profitability in the first 9 months of fiscal 2023. Cost of goods as percentage of revenue stood at 70% as against 72.61% in the corresponding quarter last year. As you all may be aware about our new capex plan of continuing top panel business, which was announced earlier, I would like to update you that our team is working on legal compliance and due diligence for land acquisition, and also team is working on machinery finalization, equipment and technology requirement for the same project. We are confident that the project will be completed by end of financial year 24, adding value and strengthening the business growth of the company. The company geographical expansion project in West Bengal is on schedule. We have created a subsidiary known as Ice-Based Private Limited in December 2022, expecting the manufacturing activity of full room of panel from April 2023 at Kolkata, and it will also be used for stock point to save logistic cost. Our strategic priority for improving financial performance also include focus increasing top line and EBITDA margin and ensuring a consistent growth of 25 to 30%. As of now, we have healthy pending order book of about 96 crore. Thank you very much for sparing your time to attend this briefing on IceMac Q3 and 9 months of financial year 23 result. Now Mr. Ankit Patel will brief about financial highlight and Mr. Nikhil Bhatt will provide business update. After that, we will proceed for a question and answer session. Thank you. Good afternoon, everyone. As our CMD said, strong demand and recovery in the end market leads to robust growth in revenue and profitability. During the quarter, total revenue jumped by 36% compared to the same quarter previous year. Consolidated total revenue in Q3 FY23 stood at 66.82 crore compared to 48.99 crore in previous Q3 FY22. Healthy sales, favorable input prices, profitability improved significantly. As against EBITDA of 3.07 crore in previous Q3 FY22, the company's EBITDA in current Q3 FY23 jumped to 7.46 crore. Higher scale, control over expense and better realization resulted in strong growth in operating profit. During the quarter, EBITDA margin almost doubled to 11.16% as against 6.27% in the corresponding quarter last fiscal.
Post-COVID, demand has recovered significantly. The company continues to capitalize on strong demand to deliver higher growth and better profitability. During the first 9 months of FY23, the company recorded robust 53.60% year-on-year growth to total revenue to rupees 199 crore, as against 129.54 crore revenue in the previous first 9 months FY22. Improved sales, favorable material prices, and control over costs resulted in high profitability. In the first 9 months of fiscal 23, the raw material consumed as a percentage of revenue stood at 70.27%, as against 72.61% in corresponding quarter last year. The company maintained good profitability. Company's EBITDA in 9 months of FY22 stood at 20.35 crore, witnessing a growth of 227% on year-on-year basis. EBITDA margin in the period stood at 10.23%, recording almost 543 basis point improvement compared to 4.80% in corresponding period of last fiscal. Further, a good 11% year-on-year drop in interest costs has helped in better profit. During 9 months of FY23, the company's net profit jumped nearly sixfold to 12.17 crore, as against 1.78 crore in 9 months FY22. In spite of increasing borrowing costs of working capital, the company is able to reduce overall finance cost. Due to better operational cash flows, the company is able to reduce overall finance cost. At present, our company is having zero working capital utilization and having surplus balance in our bank account. Thank you. Over to Mr. Bhatt, the business and industry update. Thank you. Hello everyone. As our CMD has updated regarding our new CapEx project, and I would like to add one more thing regarding our geographical expansion business in West Bengal. As initial investment would be around 2 crores, and the name that is based is our new subsidiary with 60% stake of the ice make. The company has developed new product freeze dryer a few years back. A freeze dryer removes water from perishable material in order to preserve it, extending its shelf life and making it more convenient for transport. It has a good business potential for our company, and we are receiving good orders for that. It's premium products and has potential for good growth. Business of heat pump dehydrator is expected to grow in future. The innovative food dehydration device for drying various foods, vegetables and fruits related items are very useful, user-friendly and very convenient for drying fruits, vegetables, agricultural crops and herbs, seafoods amongst others without major change in their nutritional value. The company is strongly focusing on cost-effective marketing strategies to enhance product awareness and build ice make brand. We showcase and receive overwhelming response from its unique product showcase at the Indian Ice Cream Congress Expo 2022 held in Hyderabad, and company also showcased technology and also at the Khajapura exhibition in 2022. Company has showcased technology-driven products that can be customized by combining our expertise and modern infrastructure to suit the specific requirement of customers. The cold chain industry in India is still in the development stage, making it one of the most promising fields in the cold chain warehousing and logistics industries. The Indian cold chain industry was valued at $19.6 billion in 20, is projected to reach $36 billion by 24, growing at a CAGR of 16%, according to one of the report from ICRA on Indian cold chain industry outlook 2024 report. India is the world's largest producer of milk, second largest producer of fruits and vegetables, and a substantial production of seafood, meat and poultry products.
but due to the pledging cold chain supply, there is a heavy loss of foods and agricultural products. For the growth, as we need to develop the cold chain sector to avoid challenges facing at present. As per reputed professional companies report, the advanced technology in cold chain storage is making its case in India. Cold chain storage, which is widely used in different industries such as food and beverages, healthcare and pharma, hospitality, is witnessing a huge surge in demand in the Indian market. Along with these industries, the agriculture sector is also observing similar demand. A few years back, Indian agriculture entered the third revolution, the cool revolution, to build an efficient market through a sustainable cold chain. The segment is predicted to become more organized to attract more attention. With efficient and effective cold chain storage, the transportation and warehousing of temperature-sensitive products from the point of origin to the point of consumption will increase shelf life and prevent spoilage, which will add value to the farmers and supply chain. Thank you. Should we open up for questions? Yes. Sure. Ladies and gentlemen, we will now begin with the question and answer session. Anyone wishing to ask a question, please press star and 1 on your touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Zaki Nasir, an individual investor. Please go ahead. Sir, good afternoon to Team IceMake and hearty congratulations on a fantastic set of numbers, Chandrakant bhai. Sir, if you could throw a little more light on the continuous panel expansion. You said that the land, the due diligence for land and as well as machinery is happening. तो ये कौन से स्टेज तक है सर? लैंड क्या स्टेज पे है और have you identified the machinery, and can we expect your first batch of production to start by first quarter of 2025? That is my question 1, sir. हाँ, प्रोडक्शन स्टार्ट तो आपने बस सही बताया कि 25 के फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग कर लेंगे. ड्यू डिलिजेंस और ऐसा ना ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, तो ड्यू डिलिजेंस में लास्ट 60 ईयर का ड्यू डिलिजेंस गवर्नमेंट रिकॉर्ड और उसमें गवर्नमेंट बॉडी की ओर से भी कुछ क्वेरी क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन था, तो थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम लग गया उसमें. लेकिन अब लगता है कि और 20 से 30 दिन में ड्यू डिलिजेंस खत्म हो जाएगा. मशीनरी में ऐसा है ना, हमने मेक और प्राइस ऑलमोस्ट फाइनल करके रखा है, लेकिन लैंड के बिगर अगर मशीनरी ऑर्डर करेंगे तो मशीनरी तो एक बार एलसी दोगे तो अपने आप प्रोडक्शन शुरू कर लेगा. लैंड और बिल्डिंग के बिगर मशीन लेना मुश्किल है, इसीलिए मशीनरी लैंड होने के शायद हफ्ते 2 हफ्ते में ही हम लोग ऑर्डर कर देंगे. फाइनेंस और ये सब हमने कंप्लीट प्लानिंग करके रखा हुआ है, तो 20-30 दिन में लैंड का जो ड्यू डिलिजेंस और ये जो है वो खत्म हो जाएगा. इसके बाद मशीनरी. जी सर, तो मार्च एंड तक आपका लैंड और एज वेल एज कौन सी मशीनरी ऑर्डर करने वाले हैं एंड ऑल फाइनलाइज हो जाएंगे लगता है सर? हाँ, मार्च एंड तक हो जाएगा. जी सर. एंड Chandrakant bhai, can you throw some light on your expansion in Calcutta, because see, I think that's a major geography for the company. It's a big market, and see, you made a very small investment there, but
Could you just elaborate on that geography a little bit, and what do you expect IceMake to do in the eastern, northeast market? It's a large market which will open up to you. And what kind of partnerships have you formed in that region, sir? How do you propose to expand, and what do you expect in the first 3 years? एक्चुअली हमारे एक पुराने एसोसिएट के साथ हम लोग मिल के वहाँ चालू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक चेन्नई में एक हमने जो भारत रेफ्रिजरेशन टेक ओवर किया, तो एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि लोकल कोई पार्टनर है जो लोकल रूल्स रेगुलेशन लोकल कंडीशन को की फैमिलियर में, तो आपका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, इसलिए हमने इनको रख के किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारा बिजनेस एसोसिएट है और 6-7 साल से हम इनसे रेगुलर काम करते हैं। दूसरा, वहाँ मार्केट हमारा इन्वेस्टमेंट छोटा है, अभी हम लोगों ने छोटे स्केल पे वहाँ प्रोडक्शन करने का रीजन ये है कि एक बार मार्केट को टेस्ट करें, वहाँ प्रोडक्शन करके प्रोडक्शन करने में कितना स्किल मैन पावर अवेलेबिलिटी कैसा है, लोकल करने के बाद प्राइस में क्या प्रीमियम मिलेगा या वो क्या फर्क पड़ेगा, ये साइज हमने टेस्ट करने के लिए किया हुआ है। 2-3 साल बाद हमें लगता है कि अगर ये हमारा एक बेसिक एक्सपीरियंस होने के बाद हम तब तक हमारे पास एक मार्केट साइज एग्जिस्टिंग 5-6 साल का जो ग्रोइंग बिजनेस है ईस्ट का हमारा, और 2-3 साल वहाँ काम करने के बाद एक सही फ्यूचर पोटेंशियल भी पता चलेगा, तो हम एक वहाँ फिर जो इंस्टॉल करेंगे, कैपेसिटी बिल्टअप करेंगे, वो उस अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन ईस्ट का मार्केट में हमें पता है कि वहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी किसी के पास नहीं है, तो अभी ईस्ट मार्केट पूरा या तो नॉर्थ दिल्ली या तो वेस्ट मुंबई या तो साउथ से ही कैटर होता है, तो सबका वहाँ लैंडिंग कॉस्ट जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी हम लोग सेव कर लेंगे, तो कुछ हम हमारे प्रॉफिट में ऐड कर सकते हैं, कुछ कस्टमर पास ऑन करेंगे, तो हमें कॉम्पिटिटिव एज बनेगा, तो हमारे वहाँ बिजनेस ग्रो करने का काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रीजन बनेगा। सो चंद्रकांत भाई, फर्स्ट ईयर में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ 30 से 40 करोड़ का आप सेल कर सके वो मार्केट में, सर? Which is not very big for a size of ice. एक बात सही है आपका, जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना, जो अभी हम लोग हमारी ये अहमदाबाद फैक्ट्री से या तो कभी साउथ की फैक्ट्री से मटेरियल लेके जाते हैं, तो वहाँ वो पॉप पैनल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो 10 से 15 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली कंप्लीट कोल्ड रूम सॉल्यूशन जो होता है ना, उसमें पॉप पैनल का जो वॉल्यूम है वो 40% होता है, डिपेंड करता है कभी कभी टेम्परेचर रेंज कौन सा है, लेकिन 40 to 60% पॉप पैनल का वॉल्यूम होता है। तो बैलेंस जो रेफ्रिजरेशन कंपोनेंट है वो फैसिलिटी में हम वेयरहाउस मतलब हमारा स्टॉक पॉइंट भी प्लान किया हुआ है, तो यहाँ से जो और सपोर्ट होता है जो अहमदाबाद फैक्ट्री से जाएगा वो वहाँ स्टॉक करेंगे। तो टोटल बिजनेस अभी भी हमारा जो है ईस्ट में ये 9 महीने के अंदर भी हम लोगों ने 30 करोड़ का बिजनेस तो किया हुआ है, ईस्ट प्योर ईस्ट कंट्री और वेस्ट बंगाल आसाम आएगा नॉर्थ ईस्ट के अलावा। तो लगता है कि ये मिलके प्रोडक्शन होने के बाद हम 45 करोड़ एन्युअली कर सकते हैं, क्योंकि 9 महीने में 30 करोड़ का बिजनेस है। तो ये फैसिलिटी होने से हमें लगता है प्योर हम 15-20 करोड़ का बिजनेस एक्स्ट्रा जोड़ पाएंगे वो फैसिलिटी एडिशनल। तो लेट अस विदाउट दैट अगर 45 करोड़ का बिजनेस होता है तो फैसिलिटी के साथ 60 से 70 करोड़ जा सकता है ये बिजनेस सर नेक्स्ट ईयर में? पहले साल नहीं जाएगा, 1-8 साल बाद हो सकता है जी, बिकॉज इस साल हमारा बिजनेस होगा 37 करोड़ होगा, अभी 9 महीने का 30 करोड़ है, तो मानते हैं कि अगले 3 महीने में हम लोग और 10 करोड़ करें तो 40 करोड़ है। 55-60 करोड़ हमें लगता है अगले साल हम लोग कर लेंगे। अच्छा, विद एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड हैविंग अ फैसिलिटी देयर। जी, इन्वेस्टमेंट टोकन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कुछ बड़ा है नहीं।
Yes sir, but sir वो market इतना बड़ा है कि don't you think you should see, I know you are putting your energies on the panel, puff panel, continuous panel, but to look at that market also in a slightly more detailed fashion is important sir at this stage. नासिर जी, अभी वैसे हमने जो इनिशिएट किया हुआ है वो इनिशियल स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब जिस हिसाब से हमने प्रेडिक्ट किया है उसी हिसाब से अगर बिजनेस डेवलप होता है तो मतलब नेक्स्ट सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आएगा, लेकिन उसके लिए जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको एक बार हम पीक पे ले जाए, वहाँ का जो मार्केट है उससे किस हिसाब से प्रीमियम हम ले सकते हैं, बिजनेस कैसे डेवलप करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हम करेंगे। ये अभी हमारे जहन में है, लेकिन उसका कोई चार्टर प्लान हमने नहीं बनाया कि भी एग्जैक्ट 1 साल बाद ही करेंगे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, अगर प्रीमियम अच्छा मिल रहा है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जी, एंड सर इनपुट प्राइसेस का क्या आपका ओपिनियन है? हैव दे इनपुट प्राइसेस आपके जो पफ मटेरियल के एंड स्टील के हैव दे स्टार्टेड कमिंग डाउन एंड इज दैट मोर फेवरेबल नाउ सर? अभी तो फेवरेबल वाली कंडीशन ही है, देयर इज नथिंग कि वो अभी हमें लगे कि वो अभी हाई जा रहे हैं या वैसा जा रहे हैं, तो अभी इनपुट प्राइसेस अभी नेक्स्ट क्वार्टर में या आने वाले 6 महीने तक हमें लगता है मोर और लेस स्टेबल रहेंगे। जी, thank you sir, and looking forward to your announcement on starting of the continuous panel, because as the economy grows, as we see things are appearing, it looks like this will be a phenomenal project sir. Thank you and best wishes. Thank you. Thank you. A reminder to the participants, anyone wishing to ask a question may please press star and 1. The next question is on the line of Nikhil Chaudhary from Chris PMS. Please go ahead. Hello. Hi. Good afternoon, Chandrakant ji and ISME team. Sir, am I audible? हाँ, आवाज आ रही है। Yes, yes. हाँ sir. Sir, congratulations on a very good set of numbers. Sir, मेरा actually एक question था. Order book last quarter was 90. This quarter we close at 96. So wanted ये समझना था कि इसमें हम लोग का ई-कॉमर्स प्लेयर्स के थ्रू क्या ग्रोथ आ रहा है, बिकॉज अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं फंडिंग थोड़ा स्लो हो रहा है ये प्लेयर्स के लिए, ये प्लेयर्स अभी भी हमें ऑर्डर बुक में कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं पॉजिटिवली, लाइक वी आर एसोसिएटेड विद वेरी गुड प्लेयर्स, तो वो पॉइंट पे क्या रहेगा सर आपका? नहीं, आपका इंफॉर्मेशन सही है। ई कॉमर्स में बिजनेस जितना अगले साल अगले क्वार्टरों में था उतना बुकिंग नहीं है, लेकिन हमारे पास तो मल्टीपल सेगमेंट है ना, डेयरी, आइसक्रीम, फार्मा, हॉस्पिटैलिटी। तो ई कॉमर्स तब हमें सपोर्ट किया था जब कोविड की वजह से हॉस्पिटैलिटी और आइसक्रीम इंडस्ट्रीज में ग्रोथ नहीं था या तो डाउन ग्रोथ था। तो अभी तो ई कॉमर्स के नहीं होते हुए भी हम लोग 96 करोड़ हैं, और ये 96 करोड़ जो क्वार्टर एंड का होता है ना, वो टाइम पे हमारा डिस्पैच भी रेगुलर हो जाता है। तो डिस्पैच जब होता है तो ऑर्डर बुक रीजनेबली कम हो जाती है, क्योंकि आपका पेंडिंग ऑर्डर डिस्पैच होना शुरू हो जाता है, क्योंकि समर का प्लानिंग की वजह से लोग फिर प्रोजेक्ट को लेट नहीं करते हैं। ओके सर। एंड सर सेकंड, हम लोग ये नोटिस करते हैं कि आपने तो ये ऑलमोस्ट 199 करोड़ के आसपास यू हैव ऑलरेडी आपने तो कर लिया है, सो इट्स नॉट प्रोबेबली, आप अगर प्रॉपर नंबर नहीं दे पाए, बट प्रोबेबली लास्ट क्वार्टर शुड बी द बेस्ट क्वार्टर आई गेस, बिकॉज लास्ट ईयर हम लोग ने 76 किया था, तो इस साल कैन वी डू बेटर, बिकॉज वो नंबर भी बहुत अच्छा आया था अपना लास्ट ईयर। ये साल तो गर्मी भी मुझे लग रहा है कि इट इज डेवलपिंग इवन फास्टर, सो वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट। जैसा हमने प्रीवियस कॉन कॉल में भी बोला था, हमारा ये Q4 एवरी टाइम सबसे आउटस्टैंडिंग और आउट परफॉर्मिंग क्वार्टर रहता है। अभी इसी साल के अब तक के जो नंबर्स है उसी हिसाब से हमें लग रहा है कि ये भी वैसा ही रहने वाला है, थोड़ा सा बेटर ही होगा, और हमें लगता है कि 280 प्लस तो हम बीट कर पाएंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। कुछ एक प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें शायद थोड़ा सा
मतलब लैंड या साइट अवेलेबिलिटी जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ एक कैश फ्लो भी है, मतलब वी आर नॉट जस्ट लुकिंग फॉर डिस्पैच, उसके पैसे भी हमें टाइम पर मिल जाए तो बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें भी हम डिस्पैच कर पाएंगे, तो 280 से प्लस ही जाएगा, उससे कम हो वैसा हमें लग नहीं रहा है, तो सब कुछ फेवरेबल रहा तो उससे थोड़ा और बेटर भी हो सकता है। ओके सर, बहुत थैंक यू, गुड टू हियर, वील डू इवन बेटर। एंड सर, ये जो वेस्ट बंगाल का हमारा प्रोजेक्ट है, लाइक कैन वी मेक इट एज बिग एज व्हाट वी आर इन द वेस्ट? लाइक आपको ये विजिबिलिटी, बिकॉज हमने देखा है आपने जो भी प्रोजेक्ट लिया है हमेशा कैलिब्रेटेड वे में ही लिया है, आफ्टर प्योर मतलब आपने छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट्स करके ही उसको स्केल किया है, सो कैन वी प्रोबेबली एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन से 5 years डाउन द लाइन? ये एक साल 2 साल का टारगेट नहीं, बट एक विजन 5 साल प्रोबेबली, कैन वी सी इट इज एज बिग एज द वेस्ट मार्केट दैट वी आर ऑलरेडी डूइंग? नहीं, वो एक्चुअली वो पोटेंशियल तो है नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न स्टेट्स में जो बिजनेस है और वहाँ की जो रिसोर्सेज है पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग, और नेशनल लेवल पे देखें जो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कहीं से भी है तो ज़्यादा है, तो पोटेंशियल इज़ वेरी हाई। और जैसे आइसमेक धीरे धीरे जो इनिशियल छोटे स्केल से आगे बढ़ती है तो हमें भी वही देख रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, और हम उसको 2-3 साल के एक एक्सपीरियंस के बाद एक स्केल पे ले जाते, वो भी हमारा भी एक एक्सपेक्टेशन है। समझ गया सर। सर थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, proud to be the shareholder. Thank you so much. Thank you. Thank you. A reminder to the participants, anyone wishing to ask a question, may please press star and 1. The next question is on the line of Rajiv Bagla from Euro Trade Support Services. Please go ahead. नमस्कार चंद्रकांत जी, अच्छे रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई आप। नमस्कार। चंद्रकांत जी, ये अपना नया प्लांट के लिए सोर्स ऑफ फंड्स हैज बीन कंफर्म्ड एंड कॉस्ट या क्वांटम और टेन्योर कुछ उसके ऊपर हाईलाइट करेंगे? मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द एक्सपेंशन। जो लैंड का इन्वेस्ट मतलब 50 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, और उसमें हमने जो लैंड की कॉस्ट है ऑलमोस्ट 40 करोड़ के आसपास का, मतलब 25% हमारा प्रमोटर कंट्रीब्यूशन रहेगा, और 37 से 40 करोड़ के आसपास की हमारी टर्म लोन रहेगी। वो हमने बैंकर्स फाइनलाइज किया है, जो हमारा एग्जिस्टिंग बैंकर है HDFC बैंक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के बावजूद भी हमें 7.85% का रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने ऑफर किया है, लुकिंग टू फाइनेंशियल, और 1 साल का हम मोरेटोरियम पीरियड एक्सपेक्ट करेंगे, तो एक और उसके नेक्स्ट 6 ईयर में हमारा रीपेमेंट रहेगा। टोटल 7 years का 10 year रहेगा। ओके, समझा। एंड बाय एनी चांस इनसे सिडबी वगैरह से कोई अपॉर्चुनिटी या ऐसा कुछ सब्सिडाइज वगैरह नहीं होगा? सॉरी, सिडबी वगैरह के कोई अच्छे अपॉर्चुनिटीज नहीं मैच हुआ है क्या? हाँ, हमने वो प्रपोजल में रखा था, लेकिन जो एग्जिस्टिंग बैंकर है उन्होंने काफ़ी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के बावजूद भी मतलब बिलो 8% इज वेरी गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सारे प्रपोजल को हमने इवेल्युएट किया और जो बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमने उसी हिसाब से सिलेक्ट किया। The borrowing is likely 35-40 crores for the tenure of 7 years, including 1 year moratorium, correct? Moratorium, yes. Thank you so much. Thank you. Thank you. Reminder to the participants, anyone wishing to ask a question, may please press star and 1. Participants, if you wish to ask a question, you may please press star and 1. As there are no further questions, I now hand the conference over to Mr. Mandar Desai for his closing comments. Before we close the session, on behalf of IceMec Board of Directors and Management,
we would like to thank you for your participation in this earnings conference call, despite public and weekend holiday today. Thank you. Best wishes for Mahashivratri and have a blessed time ahead. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, on behalf of Ice Make Refrigeration Limited, that concludes this conference call. We thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.